So, when I was maybe 12 or 13 years old and I came on social media for the first time, like I started using Insta and Pinterest and all, I saw teenage influencers celebrating their 16th birthday in the most grand way possible. और एक तरह से सेकंड क्लास इन्फ्लुएंसर तो मैं भी हूँ सो आई थॉट कि अपना कोई एक बर्थडे तो मैं भी इसी तरह से सेलिब्रेट करूंगी मस्त हाइप क्रिएट करूंगी मेन कैरेक्टर वाइब्स एंड फॉर माई 16th बर्थडे आई डिड एग्जैक्टली दैट बट इस बर्थडे के पहले मुझे इतना कुछ झेलना पड़ा है कि नाउ आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी टू टेल तो वॉच टिल द एंड एंड हियर द फुल स्टोरी. So, because my birthday comes at the end of the month, that gives me the opportunity to celebrate the whole month as my birthday month. And I just love October because, first of all, the weather. It's neither too hot nor too cold. And then I've seen this idea on social media that October brings a turning point in many people's lives, and people fall in love in October because there are literally songs based on that. एंड आई थिंक इट्स प्रीटी एविडेंट कि मेरा सेल्फ ऑब्सेशन इस चरम सीमा पे पहुंच चुका है कि मैंने अपना बर्थडे मंथ तुम्हारे सामने बेस्ट मंथ की तरह प्रूव कर दिया है. सो दिस होल मंथ आई फील लाइक गॉड हैज केप्ट मी रियली हैप्पी, लाइक नो स्ट्रेस, नो प्रेशर, एवरीथिंग वाज जस्ट फ्लोइंग एक्सेप्ट द 2-3 days नियर माय बर्थडे. अब जब तक कुछ प्लॉट ट्विस्ट नहीं आएगा, एक दो आंसू नहीं गिरेंगे, तब तक मजा आएगा क्या? पीस, मेंटल पीस, इन सब में मजा है नहीं. सो अक्टूबर शुरू होते ही आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर ड्रेसेस ऑनलाइन, जूडियो में, वेस्ट साइड में, एंड फाइनली आई बॉट 2 dresses. So I bought 2 dresses because I liked both of them and I just wanted to take them both home. I tried them at home because देखो जूडियो जैसे स्टोर्स में वो इतनी लाइट भर देते हैं कि you can end up buying dresses that you will never buy if it weren't for the lighting, and फिर घर जाके रियलिटी चेक मिलता है. So anyways, I decided that I'll wear this dress. क्योंकि उस टाइम मुझे उसमें बर्थडे गर्ल वाली फीलिंग आ रही थी. बट क्या मैंने वो ड्रेस पहनी? नो. सो डिड आई वेयर द सेकेंड ड्रेस? ऑल्सो नो. सो आखिर मैंने कौन सी ड्रेस पहनी वो मैं तुम्हें अभी थोड़ी ना बताऊंगी. अब स्टोरी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं. So I had planned बहुत पहले से कि I will celebrate my birthday in a restaurant called 7 Degrees, but because मेरे birthday के पहले दिवाली आती है, so we were busy in that and we couldn't book the restaurant beforehand. So the next day we had to leave for Allahabad and I thought कि रास्ते में शायद restaurant आ जाए and then बात हो जाएगी. We went there and the restaurant was closed. Then we called the restaurant while sitting in the car, but nobody was picking it up. It was switched off. And can you blame the restaurant? कौन सा पार्टी रेस्टोरेंट सुबह 10 बजे खुला होता है? बस उस दिन से मेरी एंजाइटी शुरू. लेकिन आई स्टिल हैड 7 days एंड आई थॉट कि हो जाएगा हो जाएगा. So I'm in Allahabad. I'm enjoying with my cousins, celebrating Bhai Dooj and all. And then I realized कि मेरा कुछ बर्थडे वगैरह भी तो आने वाला था ना. And I realized this 3 days before my birthday and we still didn't have a restaurant. So we called 7 Degrees again and जिसका डर था बस वही हुआ. The restaurant was already booked for 28. बट अपनी थोड़ी बहुत अकल की वजह से मैंने एक बैकअप ऑप्शन भी सोच रखा था and that was the Perch. Perch is a rooftop restaurant with a glass cabin dining, a DJ and a spectacular view. We called them and I was praying कि भाई अब ये तो फ्री होना चाहिए. And finally, I had the restaurant for my birthday. फिर पूरे दिन we decided the decorations, menu, the invitations were sent and everything was set. So my anxiety changed into excitement. Then we returned to Kanpur on 26th October, like 2 days before my birthday. And guess what? New problems were waiting for me in Kanpur. Remember I told you guys that I wore none of the dresses that I bought for my birthday? Well, this is why. So I had ordered a leather skirt from Amazon to wear with this top and it arrived when I was in Allahabad. So I tried it for the first time 2 days before my birthday. A very smart decision, I know.
एंड स्मार्ट डिसीजन का रिजल्ट भी मुझे डिसीजन अनुसार ही मिला है. द स्कर्ट वॉज सो हॉरिबल दैट आई वुडंट वेयर इट, चाहे मुझे फ्री में क्यों ना मिले. My birthday is day after tomorrow and I still don't have a dress, which was the most important thing to me. अब मेरी एंग्जाइटी वॉज एट पीक बिकॉज अगर मुझे एक महीने में ड्रेस नहीं मिली तो मुझे एक दिन में क्या मिलेगी. बट आई हैड वन ऑप्शन एंड दैट वॉज टू गो टू Zudio tomorrow and look for something better. और ये प्लॉट ट्विस्ट सॉल्व होने से पहले एक और प्लॉट ट्विस्ट आ गया बिकॉज शायद भगवान को अभी मेरे और मजे लेने थे. So before going to school, I opened my phone and my best friend had texted me the night before that he's not well. And it was the most upsetting thing ever. और अब मेरी पॉजिटिव थिंकिंग एबिलिटी ये वो सब जा चुका था एंड मैं स्कूल जाके रो दी. एंड लेट मी टेल यू, आई क्राई एट द मोस्ट माइनर इनकन्वीनियंसेस इन माई लाइफ. तो अभी तक तो मैंने अपने आप को काफी कंट्रोल कर रखा था उस हिसाब से, लेकिन शायद ये देख के भगवान को फाइनली मेरे ऊपर थोड़ा तरस आ गया एंड वन बाय वन everything started fixing on its own. I went home and my best friend called me and said that he's completely fine now and he'll come for sure. And I was so relieved कि at least मेरे सारे friends तो होंगे वहाँ पे. And then the only thing left was my outfit. So although I had no hope, I went to Zudio and I found the perfect dress. But let me tell you, I found this dress after buying 4 dresses in all. And this dress was there when I went to shopping for the first day. अब मेरी मम्मी ने तो कह दिया है कि अब 3-4 महीने तक मुझे कोई कपड़े नहीं खरीदने मिलेंगे and I guess it's fair. The next day was the best day of my life. I had so much fun and because nothing went according to my plan, it was much better than what I had expected or imagined. The last minute dress, the last minute venue, everything was much better than my first choice. And honestly, all this drama made this day much more special and much more memorable. And मुझे content भी मिल गया. I think I found it now. Everything I want might be a miracle. I know I'm never coming down. I don't gotta worry about a single thing. I can feel the light coming down on me. Sunshine on my face. I got sunshine on my face. I don't gotta care in the world right now. Higher than the ceiling, breaking through the clouds. Sunshine on my face. So guys, I got sunshine on my face. Yeah. I got sunshine. I got sunshine. So thank you guys so much for watching this video. Tell me what you think about this one in the comments and tell me what I should post more. बिल्कुल भर दो मेरा comment section. Follow me on Instagram because I'm thinking of uploading more videos on Instagram also. So that's it for this video guys. I'll see you in the next one. Bye. Yeah. I got sunshine. I got sunshine.